ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ BBMB ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਓ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ BBMB ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BBMB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡਾ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BBMB ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ, ਇਹ ਤੜਕੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰੀ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂ ਲੜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਆਰਮੀ ਕਾਫੀ ਫੌਜ ਲਾਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਧਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ BBMB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫੱਟਾ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਮੈਂ BBMB ਨੂੰ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ BJP ਤੇ BBMB ਹੋਊ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਚੁਣੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਧਰਨੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ, ਇਕੱਲੇ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਣੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਕਿਹਦਾ ਬਚਾ ਰਹੇ? ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ AC ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, AC ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਮੋੜ ਲਏਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ BBMB ਦਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਤਮਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ BBMB ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੀ BBMB ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਰਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਮਰਾਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡਾ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ BBMB ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ BBMB ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ BBMB ਪਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਕਤ ਰੁਕੇਗੀ? देखो बलदेव जी, ये हैरानीजनक गल है ये कि सेंटर क्यों पंजाब नाल वितकरा कर रहा है, क्यों मतरेई मां वाला सलूक है जिहड़ा कर रहा है। एक पासे तां तुसीं देखो कि साडे देश दे विच अज माहौल की बनिया, पूरा सेंसिटिव माहौल है और खास तौर ते पंजाब दे विच तां सेंसिटिव इस करके हो जांदा है क्योंकि साडा 532 किलोमीटर दा बॉर्डर है जिहड़ा वो पाकिस्तान नाल लगदा है। सो साडी सारी पुलिस फोर्स है जिहड़ी ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ BBMB ने अधिकारी भेजे भाखड़ा डैम के उत्ते और वो बलदीप जी डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है, कृपा करके चुप करवाओगे दूसरे प्रवक्ता जिहड़े जी ठीक है। सो दूजे पासे देखो बलदीप जी भी एक साडा पानी भी लुट के जिहड़ा वो हरियाणे नूं दित्ता जा रहा है और हालांकि इत्थे मैं क्लीयर कर दियां कि जिन्ना पानी बनदा सीगा हरियाणे दा वो हरियाणा वरत चुक्या और उस तो 3% वध वरत चुक्या। सो फिर भी पता नहीं क्यों पंजाब तो वार-वार डिमांड की जा रही है। पिछे जो डिमांड की इन्होंने कि सानू पीण वास्ते मानवता के आधार पर पानी दिता जाए तो असी 4000 क्यूसक पानी है जिहड़ा होर हरियाणे नूं छड्डिया दिता। सो उस तो बाद जिवें आपां नूं एक आदत नहीं पै जांदी कि होर मंग लो। सो 8500 क्यूसक की डिमांड रखती। सो अज पता नहीं क्यों बजिद होए है। BBMB भी हरियाणे की बोली बोल रहा और सेंटर BBMB ते दबाव बना के वार-वार अधिकारियों नूं जिहड़ा नंगल डैम है उहदे ते भेज रहे हैं ताकि पानी है जिहड़ा छड्ड के हरियाणे नूं दिता जाए। सो इस करके अज साडे पंजाब दे ऑनरेबल CM सरदार भगवंत सिंह मान जी खुद नंगल डैम ते पहुंचे और उत्थे जाके रोकिया और ताड़ना भी कीती कि असी एक बूंद भी पानी दी है जिहड़ी पर मैं वही कुलविंदर जी गल कर रहे ना कि ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ BBMB ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਪਕੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਰਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਮਰਾਜੀ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ BBMB ਤੇ BJP ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮਰਾਜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? जुड़ा कहाँ है, कट गया फोन तो। लगता कि आवाज़ जी उन्होंने तक नहीं पहुँच पा रही। सो दर्शक अपनी राय साढ़े नाल उन्नी देर तक साझी कर सकते हैं, वो इस मसले के बारे की कुछ सोचते हैं, की कुछ कहना चाहते हैं, अपना जो भी पक्ष जो दर्शक रखना चाहते हैं वो जरूर एक बार रख सकते हैं। तो सो रामराजी शर्मा जी साडे नाल BJP तो जुड़े हुए हैं। रामराजी जी, मुख मंत्री भगवंत मान ये कह रहे हैं कि पानी के मसले ते BBMB और BJP इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री का ये बयान सरासर गलत है, तथ्यों से परे है, मनगढ़ंत है और इलीगल भी है, क्योंकि पानी का जो मामला है ये हमारे समझौते का उल्लंघन भी है। ये 21 मई 1981 को
बार मिलता आया है और ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार मिल रहा है, मिलता आया है। कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। ये प्रॉब्लम कहां से आई है? ये हमारे पंजाब की देवतुल्य जनता जनार्दन और हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन को समझने की जरूरत है। ये समस्या क्यों आई? पंजाब ने हमारा पानी क्यों रोका? क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार थी और केजरीवाल इनकी पार्टी के मुखिया हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। और केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा यमुना नदी में जहर मिला के उसका पानी दिल्ली की जनता के पास में भेज रहा है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी जमुना का जहां अंतिम छोर है वहां गए, वहां जाकर उन्होंने पानी पिया और केजरीवाल को कहा, पल्ला गांव है वो, केजरीवाल को कहा कि केजरीवाल मैं ये शुद्ध जल पानी आपके पास में भेज रहा हूं, मैं पी भी रहा हूं और आपके पास में भेज भी रहा हूं। आप भी जहां पे महात्मा गांधी जी विराजमान हैं राजघाट के पास में, आप भी ये पानी पीजिए और नहीं तो दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन से और हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन से आप माफी मांगिए। और जनता ने उनको सबक सिखा दिया। हमारी हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं भाई जनता ने पानी पिला दिया। तो इस जनता ने उनको सबक सिखाया, उनको नकार दिया, इनकी सरकार खत्म होगी दिल्ली में। और माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष भूमिका रही, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की, उनकी विशेष ड्यूटी लगी थी वहां पे। स्पष्ट बहुमत हमारा आया, 48 सीटें वहां पे भाजपा ने जीती और हरियाणा की बेटी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, ठीक जो है। हमारे दुल्लाना के नजदीक गांव में जन्मी है। तो इन्होंने उससे चिढ़कर, हमारी लोकल लैंग्वेज है, उससे नाराज होकर इन्होंने दिल्ली की जनता को सबक सिखाने के लिए इन्होंने दिल्ली का पानी बंद कर दिया, हरियाणा का पानी बंद कर दिया। क्योंकि हरियाणा में तो इनकी दुकान ही नहीं खुली, हरियाणा में तो इनकी एक भी सीट नहीं आई। पर रामराज जी मुख मंत्री भगवंत मान बार बार ये गल कह रहे हैं, कहते कि पानी तो ऑलरेडी जा रहा हरियाणा नूं, राजस्थान नूं भी पानी ऑलरेडी जा रहा है। पानी ज्यादा जो ज्यादा डिमांड, एक मिनट मेरा पॉइंट ले लो फिर तुसीं गल करियो। पानी ज्यादा दी जो डिमांड गल कीती जा रही है हरियाणा दे वल्लों, उन्होंने कहा कि इस वेले डैम्स दे विच पानी उन्हां नहीं है, रिजर्वर्स दे विच पानी उन्हां नहीं है, इस करके असीं दे नहीं पा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि असीं मना नहीं कीता, पानी ज्यादा होएगा तो असीं दे दांगे। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरी बात बीच में रह गई थी जी। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की। और हरियाणा के किसान खुश हैं, सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं और उनका भुगतान भी, फसल का जो किसान अपनी फसल बेचता है 48 से 72 घंटे में उनकी फसल का भुगतान हो रहा है, उनके पैसे मिल रहे हैं, उनके खाते में जा रहे हैं जी। और पंजाब का किसान दुखी है क्योंकि वहां एमएसपी पर फसलें खरीदी नहीं जा रही, ना ही उनकी जो भुगतान है, जो फसल बिक रही है उसका टाइम पे हो रहा है। वो किसान दुखी हैं। और उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंजाब के सीएम को कहा था कि मान साहब, इनके ऊपर डंडे मत बरसाओ, ये हमारे अन्नदाता हैं, इनकी इज्जत करो। और हम भी, हाँ, हम भी किसान के बेटे हैं, हमने भी किसानी करी है। किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, या जिसने किसानी करी हो। मैंने भी किसानी करी है, मैंने पानी भी लगाया कस्सी लेके खेत में, मैंने दाती लेके गेहूं भी काटी है। सर ये दावे तो मुख्यमंत्री मान भी बहुत बार करते हैं, ये दावे तो मुख्यमंत्री मान भी करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको वही तो बता रहा हूं। अच्छा, 8,500 क्यूसेक का हमारा समझौता है और उसके अनुसार हमारे को पानी मिलता आ रहा था, पहले भी मिलता आ रहा था। ये नौबत आई क्यों? क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार चली गई, पंजाब में हमारे मुख्यमंत्री जी की मांग बढ़ गई, क्योंकि पंजाब के किसानों ने मिलना शुरू कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी से। और वो कहने लगे कि भाई नायब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री पंजाब को भी चाहिए।
चलो ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਕਾਰਨ ਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹਜਮ नहीं कर पाए इनकी पार्टी। ठीक है होल्ड करो ना राम राजी जी, थोड़ा जिहा होल्ड करो, थोड़ा होल्ड करो, एक बार जवाब लईए, आपां जवाब लईए। कुलविंदर जी। बलदेव जी आवाज नहीं आ रही आपकी। कुलविंदर जी, जो उन्होंने कहा कि राम राजी जी ने कि ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ मेरे को, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ रुक करदा। ये तो आवाज आपके पास वैसे नहीं आएगी जी की आवाज आ रही है बलदेव जी, आपकी नहीं आ रही। मेरी आवाज चलो ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। हाँ, जवाब दे देता हूं उनका। मैं शर्मा जी को बताना चाहता हूं कि जो ये जमुना का बात करते हैं, वहां पर नायब सिंह सैनी ने पानी पिया नहीं था, पीकर कुरली कर दी थी। आप वीडियो निकाल कर देखें, पहली बात। दूसरी बात, शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारा 8500 क्यूसेक पानी और बनता है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि 21 मई से लेकर 21 मई तक एक साल का 2987 आपका MAF पानी बनता है, पर आपने उससे 3% ज्यादा वर्त लिया। आपने 3091 MAF पानी वर्त लिया एक साल में, और दोबारा आपने डिमांड की हमें मानवता के आधार पे कि और पानी दिया जाए हमें पीने के लिए। तब पंजाब ने आपको 4000 क्यूसेक पानी और दिया, और आज आप किस पानी की डिमांड कर रहे हैं? आज जितने भी डैम है पंजाब में, चाहे पौंग डैम है वो 35 फीट है जिहड़ा वो डाउन है, और जे रंजीत सागर की बात करें तो वो 20 फीट डाउन है। अगर जे हम भाखड़ा डैम की बात करें तो 12 फीट डाउन है। और कहां से आपको पानी दें? और मैं शर्मा जी को एक सवाल करना चाहता हूं कि आप किसके लिए पानी मांग रहे हैं? पहले तो ये बताइए, आप पीने के लिए मांग रहे हैं कि फसलों के लिए मांग रहे हैं? अगर जे पीने के लिए मांग रहे हैं तो आपकी आबादी के हिसाब से आपका 1700 क्यूसेक पानी बनता है, और आपको 4000 क्यूसेक दिया जा रहा है, तो फिर आपने और पानी क्या करना है? अगर ये फसलों के लिए मांगते हैं तो फिर जब आप मीटिंग हुई वहां पर आप पीने के लिए क्यों कह रहे हैं? कोर्ट में पीने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो आप पहले तो ये क्लियर करें कि आप पीने के लिए मांग रहे हैं कि फसलों के लिए मांग रहे हैं। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि हमारा 8500 क्यूसेक पानी बनता है, पहले भी आता था। पहले शर्मा जी क्यों आता था कि पंजाब में दूसरी सरकारें थी, जहां तो अकाली दल बीजेपी की थी, जहां कांग्रेस की थी, और वो मर्जी के साथ आपको पानी बेचते रहते थे। लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार है, जिन्होंने जो 21% खेतों तक पानी पहुंचता था वो आज 60-70% खेतों तक पहुंचने लगा दिया। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1700 क्यूसेक ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? सर सत श्री अकाल जी, सब सारे जी। मेरा नाम गगनदीप सिंह है जी, मैं डिस्ट्रिक्ट पटियाले तो बोल रहे हैं जी। हाँ जी हाँ जी सर, पहला तो जी बीजेपी ते आप दे ਜਿਹੜੇ बैठे ने जी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी जी। ਤੇ ਸਰ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ SYL ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਬਸ ਸਰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹਿ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। हाँ बिल्कुल 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 ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੈਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ 12 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ 20 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ तमाम ਆਗੂ। ਤੇ ਕੁਝ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਦੀਪਕ ਭੱਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸके ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ फौजी कहना सैनिक आ गए भी सैनिकों को पानी देना, इसलिए इस बिहेव के उत्ते राजस्थान च पानी भेज दिया। रॉकेट तो साढ़े कहना अंबाले तो भी उड़ रहे हैं, हरियाणे तो भी, उत्थे फौज है नहीं जी, उन्होंने भी तो फौज आकर बॉर्डर से लड़ रही है। जो राजस्थान की लड़ रही है, पंजाब की लड़ रही है, जो थोड़ा जा पानी इन्होंने दे देंगे तो वही ये तो इन्होंने कह दिया। लालू प्रसाद भी कहना मैसा का चारा, जब मैसा नहीं बोलते हैं चारा खा भी गए तो क्या हुआ, अगर थोड़ा जा पानी दे भी देंगे सी कोई दुनिया संकट के बीच आई भी है, पानी के मुद्दे उत्ते अपनी लड़ाई लड़ी जा रहे हैं। क्या हो गया जो थोड़ा सा पानी राजस्थान तो इतना पैसा लेना है सी, कहना इन्होंने वो तो डिमांड करी नहीं, सिर्फ पानी के पीछे लड़ाइयाँ हो रही है। वो कहने असी कहना पंजाबी दिलदार होने, कहाँ की दिलदारी है, एक पानी के पीछे की इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। नहीं पर भल्ला साहब वो तो पंजाब का ये कह रहे हैं ना कि पानी तो दे ही रहे हैं, ये तो कह ही रहा 4000 क्यूसिक का पानी जा ही रहा ना। सारा ये भी तो पूछ रहे हैं भी कहना राजस्थान इन्होंने पूछा भी तुसी पीने वास्ते ले रहे हो या खेती वास्ते ले रहे हो। जे हरियाणा ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ खेती वास्ते लेना ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੌਜ ਲਈ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। खेती नहीं होएगी जी, खेती भी ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਰੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ? आठ 8,000 क्यूसेक पानी हमेशा मिलता रहा है और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। भाखड़ा जो बांध का है वो पानी का लेवल घट गया है, घटा नहीं है वो। इनको पाकिस्तान तो प्यारा लगता है, इनको ये पता होना चाहिए हमारा देश कितनी क्रिटिकल पोजीशन से जूझ रहा है और पाकिस्तान के साथ हमारा लड़ाई चल रही है और ये वेस्टेज पानी है, ये पाकिस्तान में बह जाएगा। भाई पाकिस्तान प्यारा है या पंजाब या हरियाणा प्यारा है पंजाब को? पहले तो भगवत मान को ये पता होना चाहिए भाई पंजाब हमारा बड़ा भाई है, बड़ा भाई होने के नाते उदारता भी दिखानी चाहिए। और फिर दूसरा, पंजाब हमारे गुरुओं की धरती है, हमारी परंपरा भी रही है, प्यासे को हम पानी पिलाते हैं, लंगर लगाते हैं, सबसे पहले हम पानी दिया जाता है गुरुद्वारों में, मंदिरों में। और जिस तरह से पंजाब का किसान उस टाइम में दिल्ली के आसपास में आया था, हरियाणा में रुका था, हरियाणा के हर छत्ती बरादरी के व्यक्तियों ने उनके सेवा भाव में, उनके आओ भगत में उनकी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तब पंजाब के किसानों ने कहा था कि भाई हम हमारी सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे, SYL का पानी भी दिलवाएंगे, चंडीगढ़ में से आपका हिस्सा भी दिलवाएंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी से हिस्सा भी दिलवाएंगे। और आज तक परंपरा रही है कि आज तक हमारे को 8,500 क्यूसेक पानी से कम कभी नहीं मिला पानी। अच्छा रामराज जी, एक पॉइंट है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਰਾਮਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਯਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰਕ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁरुओं ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ हो। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय पहले आप उस पे आ जाओ। ये पहले कह रहे हैं केंद्र सरकार ने इंटरफेयर नहीं किया, अब ये कह रहा था आपका आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता। माननीय केंद्रीय गृह सचिव ने मीटिंग बुलाई, हरियाणा की भी, पंजाब की भी, और जिसमें राजस्थान भी शामिल था। ठीक है, इस वेले मैं रोकना चाहना दोनों मेहमानों को, क्योंकि इस वेले DGMO दी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आ रही है, सीधा रुक करते हैं। Good evening, ladies and gentlemen. Jai Hind. Welcome to this special press conference on Operation Sindoor. We will begin with opening statements by the three senior officers to my right here, who have been directly overseeing operations during Operation Sindoor. We have Lieutenant General Rajiv Ghai, Director General Military Operations, who will cover the aspects related to land domain. Air Marshal A.K. Bharti, to his right, Director General Air Operations, will provide insights on the air domain. And to my right is Vice Admiral A.N. Pramod, Director General Naval Operations, who will cover aspects on maritime domain. Following their briefings, we will move on to the question answer session. I now request the DGMO to commence the opening brief. Thank you, Sandeep. A very good evening to all of you, ladies and gentlemen. You are all by now familiar with the brutality and the dastardly manner in which 26 innocent lives were prematurely terminated at Pahalgam on the 22nd of April. When you combine those horrific scenes and the pain of the families that the nation witnessed with numerous other recent terrorist strikes on our armed forces and defenseless civilians, we knew that the time had arrived to make yet another compelling statement of our resolve as a nation. Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized
that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. The precise images of these engagements on that fateful and historical night have already been showcased during the first press statement on the 7th of May that was helmed by our Foreign Secretary. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Indian Air Force obviously had their assets up in the sky, and I will here request Air Marshal Bharti, the Director General of Air Operations, to detail for you the methodology that the men in blue adopted to successfully manifest this mission. Thank you, Rajiv. A very good evening, ladies and gentlemen. It indeed is a difficult time that we have to come here like this and brief you. We could have done without this, but we had no choice. As the DGMO has detailed, the event was precipitated by the dastardly act at Pahalgam. The sequence of events have already been detailed. We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid
collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted airstrikes. Could I have the second slide, please? Yeah, change, please. Okay. This is what the terror infra at Muridke looks like. If you see, north is as indicated, and to the right is east, where the international boundary lies. Could we have the next slide, please? Orientating. Just go back to one slide. Okay. Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Next, please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide, please. Third weapon, third impact. Continue. And fourth weapon, fourth impact. So through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the terrain infrastructure. Can you hear me? All right. Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. Okay, just wait. So the effect, if you see, the impact point, if I can point out, this is the impact point. The ammunition has gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that there was this double-story building. It has been completely decimated by our precision targeting. Next, please. The target system, which was in the north, a series of buildings. I will show you how it looked. Next. Completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. And orientation in relation to this red canopy, you can see here. Next, please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Next. All right. So that was what we did on the 7th. Our objective was to address these two enemy
these two terrorist camps, and that we did with precision. And thereafter, we maintained a robust air defense posture, because remember, our objective was to target the terrorists and terrorist infrastructure, not any other infrastructure, not the Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. So that is what we have maintained on the 7th of May. However, what we saw in the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. Thank you. Thank you, Air Marshal Bharti. So, ladies and gentlemen, he's outlined operations not only on the night of 6th and 7th of May, when Operation Sindoor commenced, but also on the subsequent night. Being well aware and familiar with the congenital and impulsive nature of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were, of course, prepared. Operations on the 7th and the 8th, Air Marshal Bharti spoken about. On the night of 8th and 9th of May, they flew drones and aircrafts into our airspace all across the borders and made largely unsuccessful attempts to target numerous military infrastructure. Violations on the line of control by Pakistan also commenced yet again and precipitated into fierce arty engagements. The air operations on the night of 8th and 9th of May, I'll yet again request the DG Air Operations to cover. So I just covered what happened on the night of 7th and 8th. What we found that on the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves, and it was relentless. However, we were prepared, and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. The difference between 7th night and 8th night was that on 7th night, he sent in his Jihad class of UAVs. However, these UAVs can go some distance, they are armed,
However, on the 8th, less numbers of armed UCAVs were there or UAVs were there, and more numbers of quadcopters, maybe for surveillance or just for harassment of civilians. This continued till midnight. Our air defense preparedness ensured that there was no damage on the ground, either to the military installations or to the civilians. However, the enemy had yet again shown that he wanted to up the ante and he wanted a fight, and we were up to the task. In a measured and calibrated response, we once again targeted his military installations, which included his SAM sites at Malirkant. This also included his surveillance radar sites at Lahore and close to Gujranwala. These were suitably addressed, and thereafter his drone attacks continued even till morning, which we countered, and during the daytime there was some respite. Here I would like to bring out another aspect. What we found was that while the drone attacks were being launched from somewhere close to Lahore, enemy had allowed his civilian aircraft to also continue to fly out of Lahore. Not only his own aircraft, but international passenger aircraft, which is quite insensitive, and we had to exercise extreme caution, even at the cost of some tactical disadvantage, to ensure that there is no damage to any of the civilian aircraft. And this was also brought out in our press briefing during the day. So I will now hand over to my colleague to cover the events of 9th onwards. On land, we also undertook certain measures such as deployment of air defense and electronic warfare assets to establish an integrated grid with the Indian Air Force, and I have seen and heard some of you wax eloquent about the benefits of such an architecture when it comes to negating and combating air intrusions. We also carried out deployment to include movement of our forces in the land, sea, and air domains. The night of the 9th and the 10th of May saw similar intrusions by drones and aircrafts, and this time there was a concerted effort to target airfields and some very, very important logistic installations, albeit yet again unsuccessful and denied gallantly and efficiently, I must say, by the integrated Indian Air Force and Indian Army Air Defense. We further strengthened our deployment and also initiated some pressure points to send a very clear and unambiguous message to the other side to desist from any misadventures on land. Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. And I will yet again ask Air Marshal Bharti to speak about these significant and game-changing strikes. I will thereafter request Vice Admiral Pramod, my colleague and Director General of Naval Operations, to tell us about some very telling naval maneuvers in the Arabian Sea that exerted pressure on the night of 9th and 10th of May. Over to you, sir. Thank you. Commencing about 2000 hours, that is 8 p.m. local time, on 8th of May, several Pakistani unmanned aerial systems, drones, combat vehicles attacked multiple IF bases. These included Jammu, Udhampur, Pathankot, Amritsar, Bhatinda, Nal, Dalhousie,
Thois, Jaisalmer, Uttarlai, Falodi, Nalia. These were almost simultaneous and they came in waves. All our AD guns and other systems were waiting for them. All these waves were neutralized by our trained crew using the air defense systems that they have, and also some of them were utilized using our legacy systems like Pechoras and IF Summer, which we have recently acquired. And some were neutralized by the Garud snipers. There was no damage on ground from these incursions and these mass raids, if I could call them, from the Pakistani side. However, following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions, and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad, Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. However, it was only a measured response to instill good wisdom to our adversary to refrain from further escalation. IF's response was directed only at military installations, avoiding civilian and collateral damage. I would now like to show you some of the effects that have been achieved as a result of our air operation. Here is the Pasrur air defense system, if you could see. Zoomed up view, this is a radar mounted on a high tower. And after the strike, thank you. Can you hear me? Yeah, thank you. And after the strike, this is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. Next slide, please. The Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th. This is the radar site. A blown up photograph, once again, on a tower. Not very clear, but what you see very clearly is the after effect after we have struck. The radar head has been completely decapitated. Next slide, please. Arifwala air defense radar. In this complex, you see how it looked before, blown up image, and after really blown up. Next. Now coming to Sargoda airfield. Remember, this is one of their important airfields wherein they have a lot of assets, F-16s, other assets which they keep getting, training institutes.
and we have stuck this airfield. It is not, if you zoom in here, then one impact point here on the runway and second impact point of our weapon, precision weapon on the runway. And if you see this blown up, repairing going on. Same here. Next. Raimiar Khan. This is the area we have struck. A deep strike out here and one complex here. So this is how it looked before, and same, you see a big crater, another crater here, and this complex, after strike, neutralized. Next. Chaklala Airfield, Noor Khan, once again a major air base, a lot of their logistic assets out here. This was the chosen complex that we intended to strike and convey a message. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how it looked after our strike. Next. Sakar. We chose the radar site at Sakar. This is the radar site, and after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. Next, please. Aircraft shelter. This is how it looked before the strike, and this is how it looked after the strike. The roof of the buildings completely caved in and burnt. Next. Dolari Airfield, aircraft hangar. This is how it looked before, and this is how it looked after the precision strike. Next. Jacobabad, aircraft hangar, and this is how it looked after. Next. So what I'm trying to convey here, ladies and gentlemen, is to start with, our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter, we only maintained the air defense posture. However, we were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. And that left us with no choice but to retaliate, and yet our retaliation was calibrated, it was graduated, and it was proportionate. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines, and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the Joint Operation Plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment, and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. In effect, we had and continue to have good battle space transparency
using our maritime domain awareness grid. As you are aware, our response has been measured, proportionate, non-escalatory, and responsible from day one. Accordingly, the calibrated approach considered all options, including the ability of the Indian Navy for offensive action from and at sea. As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan or Pakistan-based terrorists. Thank you. Samno Varna, Jai Hind. Now I'll hand over to Director General Military Operations for further proceedings. Ladies and gentlemen, on the 10th of May, in the morning, even as we were getting into a huddle to wargame the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps, and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours, 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. However, disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently, or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter-actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families, and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond, at this grave juncture in their lives.
Their sacrifices shall always be remembered and spoken of in glowing terms by a grateful nation. We have thus far, ladies and gentlemen, exercised, and my colleague Pramod highlighted this, immense restraint, and our actions have been focused, measured, and non-escalatory. However, any threat to the sovereignty, territorial integrity, and safety of our citizens will be met with decisive force. Jai Hind. Okay, ladies and gentlemen, we are now open for questions. All right, now since I would not know all of you, I would expect you to please raise the placard or your hand, and once I indicate, I expect you to please give out your name and the media group that you belong to. Keep your questions short so that we can take as many questions as possible. Also, ladies and gentlemen, kindly bear in mind that confidential aspects may not be answered by the 3 DGMOs. Right. I've got a lot of hands there. Let me start from the left. Left foot always in front when we start marching. So here we have to the left, okay. Yeah, 238. Hello. So this is Manas Pratimhuyan from PTI, Press Trust of India. So the understanding that was reached yesterday on stopping the military operations and actions, was it for just 3 days? And what would be the cost escalation if there is violation of this understanding by the Pakistani side? And my subsequent question would be that we have a kind of ceasefire agreement with Pakistan that was finalized in 2003. So will there be some kind of similarities in frameworks between the two kind of understandings, 2003 ceasefire agreement and the current understanding on stopping military operations? And again, what are the cost that will be incurring on Pakistan if Pakistan again resorts to this kind of terrorist activities, because we have made it very clear that the cost will be very high. So I would like to have your thoughts on it. Okay, so I'll answer the latter part of the question first. I also want to add that while the initial ceasefire agreement, as you correctly pointed out, is of the 2003 vintage, but I must remind you that in 2021, in the month of February, and this was then when the crisis in eastern Ladakh was also on, the 2 DGMOs had spoken and arrived at a ceasefire understanding that lasted right up until this unfortunate attack at Pahalgam. Once our Foreign Secretary had announced the decisions of the CCS in the immediate wake of that attack, he had announced certain measures, and then of course Pakistan had in turn made its own announcements. Since then, there have been certain violations of this ceasefire understanding, and of course after the 7th of May, like I pointed out during my statement, that there have been numerous violations on the line of control especially, and of course along the international boundary by the Pakistan Army and the Pakistan Air Force. This understanding that we spoke about yesterday, no, it was not for 3 days. It was first to stop aggressive and hostile activities immediately, let that order and direction settle down for about 36 hours, and thereafter discuss modalities, like I said, to ensure its longevity. That is tomorrow on the 12th of May. But unfortunately, we had a violation starting at approximately 1900 hours last night, and we've sent a communique, like I said, to the Pakistan Military Operations Directorate, and we will await
to what happens tonight. All right. The cost escalation, I mean, I'll leave it to your best imagination. I've already said that the response will be fierce and punitive. Now, the right foot forward. Yeah. Sir, I am Ajit Dubey from ANI, sir. Sir, my question is that you talked about the loss of lives to the Pakistan army, that was around 35 to 40 kills secured by the Indian army. Sir, can you tell us what would be the total loss of life to the Pakistan army in both army and air force attacks, sir? And how good was the performance of the BrahMos, Scalp and the S-400 during the operations? And sir, since we have just one line. No multiple questions, please. Sir, all right. And since sir, we have achieved such a spectacular, we have made good achievements in this entire operation, can we say that we have emerged victorious, or we have a big upper hand over the Pakistanis in this entire conflict? Thank you very much, sir. So I'll answer the question about the loss of lives on the other side. Of course, there are various means to ascertain that number. There is information from various agencies that come in. There are, of course, on the line of control, other ways to find out as to what has been the effect of what you are doing there in ceasefire violations. So therefore, I mentioned 35 to 40 on the line of control, and please remember that once Operation Sindoor was launched, the responses of the Pakistan Army were also on Indian Army or the Indian Armed Forces infrastructure. Let me put it that way. So that's why I did not cover casualties of the Pakistan Army, at least in the initial phases of battle, because those were not our targets. Our targets were terror-oriented, and of course later, once they launched air intrusions and air operations on our infrastructure, we've used heavier weapons, and of course there would have been casualties, but those are still being assessed. The effects of the weapons that you mentioned, I will request Air Marshal Bharti to apprise all of you about those. Good evening, Mr. Sujit. How are you? Ajit. Okay, we're meeting after some time. I never mentioned about any of the weapons that we used. Check. Okay. What I was saying, that I never mentioned of any of the weapons, the caliber that we used. All right. So we'll leave it at that. Those are matters of operational details which I would not like to go into. But suffice to say that whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy targets. How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. And the last part of your question, I wonder if you read out the tweet on ADG-PI at midnight once we'd done what we had to in Operation Sindoor. And that's credit to my friend here on the left. Justice has been served, Ajit. That is all that I will say. Ajit, I'll request you to, refrain putting words into his mouth. All right. Yeah, I'll come back to the left. 147. Sorry, 47. No, 47. Did I see it here or? Yeah. Good evening, gentlemen. Sorry, 147. I saw it there. Sorry. Yeah. Since I've already said 147. Start, please. Hi, sir. Good evening. This is Shivam Patel from Reuters News Agency. Thank you for giving me the opportunity. My question, sir, is how many military targets
did Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attacks from Pakistan? How were these targets selected? And how many troop casualties have been there in total on both sides, if you can give details? Thank you. I'm sorry, where are you? I haven't spotted his name. He's to the right. Okay. Can you just repeat that for me, please? Sure, sir. So my name is Shivam Patel. I'm from Reuters News Agency. My question is, how many military targets in total did the Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attack from Pakistan? How were these targets selected? And how many troop casualties have been there on both sides, if you can? So you're speaking of the targets that I mentioned in the wake of the attack at Pahalgam, right? Yeah, I think it's amply clear to everybody here that the Pakistan Army has not crossed the international boundary, neither in the plain sector nor on the line of control. So the intrusions have been in the air. There have been certain attempts on the line of control when ceasefire violations have been on to try and infiltrate and carry out and perpetrate activities that we are all very well familiar with. Whether these are by terrorists or by the Pakistan Army or its special forces and commandos is difficult to say, but each of these have been effectively thwarted. So therefore, as far as engagements of military targets on the other side is concerned, I thought Air Marshal Bharti covered those very well and in detail, and he also mentioned as to how they went about targeting those. I think those images were very clear and very, very graphic in telling us as to what we needed to hit. And you'll remember right at the outset I said that we even went into what was the construction in each of these locations and therefore decided on the vector that had to be utilized. Please. Okay, if I could add to what the DGMO has said, I have already detailed the targets. Now, whether it is X numbers or Y numbers that is immaterial. And what damage have we inflicted, you have seen. What are the casualties on the other side? As I said, that is for them to count. As far as we are concerned, from the air defense side, if they had a choice, they would have definitely come in. They are fighters, there are more numbers of UCAVs. It is not that they did not intend to come in. It is only that our robust AD posture prevented them from coming in. So that must be known, and that must be realized by all the audience here. Yeah, I'll come to the left now, 24. Good evening, sir. This is Anuvesh Rath from Z. Sir, I wanted to know on the first briefing which was done by FS and two representatives from Air Force and Army, you showed a list where there was 21 places in that list. You have stuck 9. Are more operations going to be held? Is Operation Sindoor still on? And the second question, thank you, sir. Thank you so much. And also, I want to congratulate all three of you for a fantastic operation that you guys have done. Thank you so much. Thank you so much for that one question. Yeah. Sir, the question. Unfortunately, Rath, is that your name? I'm sorry. As far as operational details are concerned, I am not in a position to share those right now. But I think I'll take a cue from Pramod. He said towards the end that the Indian Navy is still in a posture that is deterrent. And I have already made it very clear towards the end of what I said that it's only a couple of hours ago that the Chief of Army Staff has carried out a security review and he's authorized our Army commanders to deal with violations of any kind from across the borders in a manner that they deem fit. So again, to reiterate, the response will be fierce and it will be punitive.
I'll go back this side now. Yeah, 255. She said middle wale kya karenge, so 255. Oh, sorry. Good evening, sir. I'm Shailesh from National Defense. Please allow me, first of all, to pay my gratitude for protecting us Indians. Thank you very much. Sir, since the enemy has been talking about taking down our aerial platforms, it would be deemed fit in case we can reveal that we have taken down their fighter jets. What could be the number? Though you said that they may be not good to reveal the platforms, but since this has come from various quarters in Pakistan, so I believe that we need to answer, in case if you can, sir, if you may allow. The question is for me? Yes, sir. Okay, and if I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers, okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they, please don't ask. Were they fourth generation plus, sir? No, see, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. Okay. Thank you so much. All right. Yeah, 163. सर मैं मंजीत नेगी हूँ आज तक से। मेरा सवाल ये है कि इस पूरे ऑपरेशन में जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, क्या नंबर्स कुछ बता सकते हैं कितने आतंकी मारे गए? कुछ नाम सरकार मतलब कुछ नाम मीडिया में आए भी हैं जो बड़े उसके मास्टरमाइंड थे। और एक सवाल जो आज एयरफोर्स ने भी एक ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और सरकार की तरफ से भी कहा गया। और पिछली बार जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी उसमें वो लिस्ट दिखाई गई थी कि 21 टेरर कैंप आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो क्या जो बाकी बचे हुए टेरर कैंप उन पर भी कार्रवाई होगी? और एक नंबर अगर आप बता पाएं कितने टेररिस्ट मारे गए? Sir, before you answer, sir, before you. Manjeet ji, 3 questions. The third one has just been asked here before. So 21 this thing. So I'll request the first to be answered so that we have more number of people who can ask. मंजीत, जब मैंने स्टेटमेंट दिया तो मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। मैम, सर नेक्स्ट इज फ्रॉम 17। सर मेरा नाम अंजू निर्वाण है, TV9 भारतवर्ष से। सर मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो इंडियन नेवी है
उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की उसकी भूमिका रही, क्योंकि हमने इस दौरान सर देखा कि बहुत सारी स्पेकुलेशन भी रही और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है। तो सर इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और सर हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। आई विल मेक फ्यू सेंटेंसेस and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. Okay. आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं। आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं, इसलिए मैं बस उस तक ही सीमित रखूंगा और इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं, तो पता चल जाएगा. So at this time we'll just let it be. Okay, ladies and gentlemen, we have 1 or 2 more questions, sir. So please, they are going to be outside. You can speak to them there also. 104. Yeah, ask, sir. Sir, Dinakar with the Hindu newspaper. Are you surprised that you got this question? No, sir. Sir, can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that, because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. Okay, hold, please don't, please be civil here. So we'll have 220 now. हेलो सर, दिस इज अनीता चौधरी सर फ्रॉम स्वदेश न्यूज़पेपर। मेरा सवाल है, क्योंकि ये हमारे जो पहले जो एक्शन रहा वो आतंकवाद के खिलाफ रहा, तो आतंकवाद में अजहर मसूद की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और जाज रुलाएंगे। तो क्या अगला, अगर खुदा न खास्ता अगला टेरर अटैक किसी भी तरह का होता है, तो क्या उसे एक्ट ऑफ वॉर में हमारी तरफ से लिया जाएगा और उसका क्या माकूल जवाब दिया जा सकता है? मेरा इसमें सिर्फ एक ही जवाब है आपके लिए कि हमने अपनी कार्रवाई करी। हमने उसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की। लेकिन
जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूँ। हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है। सर मैं एक सवाल इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, 1 मिनट। हम जो मिलिट्री होता, our main job is to prevent war and maintain peace and stability. So it is not that our response is a graded response. That means अगर किसी ने किया तो उसको graded उसमें किया, जैसे terrorist action हुआ तो what we did is a terrorist action and we destroyed all the terrorist camps. उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको उनके ऊपर थोड़ा। So our aim is to maintain peace and tell our adversary that you do this and the response will be bloody. Okay, now as per the, please, we'll have 166 and 25 and after that no more please. Sir, this side. Ladies and gentlemen, please maintain, I request you to please be quiet. Jal Ghai? No. This side, sir. We have only 2 questions left, 166. Yeah, please ask. Sir, I'm Rahul Singh from Hindustan Times, sir. So you were totally on top of the game in the kind of losses you've inflicted on the enemy. I mean, we saw the slides and everything. So it kind of comes across that you were batting it 99 and you decided to declare your innings. What are your thoughts on that, sir? And do you think, are you weighing the option of the Pakistan army using this time, buying this time of the so-called ceasefire or the understanding? And you talked about how they could not be trusted. So buying time to kind of build up their war reserves, getting stuff from their friends like Turkey or China, are we considering that possibility, sir? Look, see, the call came from the Pakistani side to speak about cessation of hostilities. What pauses mean during such conflicts is known to everybody. You know, I don't want to go into the pros and cons of how preparation for war is made. You know, that is a process in itself. But I think my senior colleague here, the DG Air Operations, spoke, or he alluded at least, you know, to what this operation was precisely and specifically meant for. And I think that's something that we achieved, you know, right at the outset. Had we had the option not to go further, we probably wouldn't have. But we've been compelled to be in this situation. And as you've seen, the armed forces of India, and you know, you've got the 3 Director Generals sitting here, we are always prepared to face any eventuality. And like I said, that's for the sovereignty, the territorial integrity, and the safety of our citizens. So whatever has to be done will be done. You know, I'm not so concerned about what Pakistan will do in this time. I'm only concerned about what we will do. We have a roadmap and a plan, and we will follow it diligently, and we will follow it to the T. You know, that's the contention that I want to make here today. Ma'am, please. Okay, the last question, and ma'am, 25, she has been asking since. Sir, I'm Nandit. Sir,
She's not asked a question. Sir, I'm Nandita Dagar, DAGAR from DD News and DD India. Sir, I wanted to ask you that my question is to General Ghai. Sir, you spoke to your counterpart yesterday and the Pakistani counterpart. Sir, what is the Indian Army's assessment that despite that agreement, that talk that you had, despite that agreement coming into effect at 1700 hours yesterday, why did they violate it? And number two, yesterday at the joint Defense Ministry and Foreign Ministry briefing, Wing Commander Vyomika Singh and Colonel Sophia Qureshi had told us that we have cited the Pakistani troops amassing at the borders and at the LOC. Sir, has that situation changed? Have they withdrawn? And sir, if in case, despite now there is a lull, of course, but if tonight again, if the enemy again carries out shelling and aerial intrusions through drones, what is going to be our response, sir? Thank you. So, without outlining the specifics of that response, I've already made it clear that there will be a response and it will be fierce and it will be punitive. Why the Pakistan Army chose the option of violating the understanding that was arrived at earlier yesterday, I think that's a question that we best answered by the Pakistan DGMO. I wouldn't be able to, give you that. But, in situations such as these, and if you go back into any conflict, sometimes these understandings take time, to fructify and manifest on ground. But without, getting into the reasons, it is our mandate to be prepared at all times, and that we were. It's not as if because there was an understanding we weren't prepared. I must tell you that the armed forces were on a very, very high alert, and they continue to be in that state even as we speak. Oh, all right. Ladies and gentlemen, please, ma'am, please. Okay, thank you so much for coming today. Those who have missed asking a question, see, I knew I'll grab this attention from you like this. Those who have missed the opportunity to ask a question can give me a written one. I will definitely get back to you with that. And also, they are they are invited for a cup of tea in my office day after tomorrow. Thank you, ladies and gentlemen, for coming. Thank you. Thank you very much. Jai Hind. Jai Hind. ਜਿਹੜੇ DGMOs ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DGMOs ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇਵੀ ਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ PCC ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DGMOs ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ DGMO ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ DGMO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ DGMO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ DGMO ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. Operation Sindoor. ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। Dailypost, Punjab, Haryana, Himachal.